All right, yes, Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We're beginning with the March variant 2023. It's variant 4.2. Or, yeah, this is variant 4.2. Chale ji, Bismillah karte hain. Let's begin. So, question number 1 begins with the figure 1.1 is a drawing of a longitudinal section of a human kidney. ठीक है जी. साथ साथ मैं आपको कुछ जनरल एडवाइजेस भी देता रहूंगा. पेपर 4 के अंदर जब भी आपको कोई भी डायग्राम आए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you spend time with that diagram. Okay, even if you are not continuing with the question और आप अभी नीचे नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप जरा डायग्राम के साथ अच्छी तरह टाइम स्पेंड करें और जो भी उसने चीज लेबल नहीं की हुई अपने नॉलेज के लिए लेबल करें, so that you know what is the question talking about. This will not waste your time. This will actually save your time for the remaining part. Okay, so अगर हम इस किडनी को देखें तो आपको पता है कि किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं. And then the inner portion is as labeled by C is known as the medulla. और ये जो B वाला part है, this is pelvis. This is where the urine gets collected, and finally it is passed on to this tube which is the ureter, which connects to the kidneys. और basically इसके अंदर urine होता है. ठीक है. All right, so the statement goes on, use the letters A, B, C, and D in figure 1.1 to complete table 1.1. Okay, so each letter may be used once, more than once, or not at all. For each description, list all the letters that are correct. Okay, so basically उसने आपको part की description दी हुई है और आपने बताना है कि region कौन सा. So we've done our part. I mean, so let's see. Locations of loop of Henle. Okay, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू गो बैक एंड रिवाइज द फैक्ट के जो पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन है वो क्या है. नेफ्रॉन की पोजीशन से पहले जल्दी से जरा अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रिवाइज कर ले, सो नेफ्रॉन वुड लुक समथिंग लाइक द फॉलोइंग, एंड आई मीन इट हैज 5 बेसिक पार्ट्स. ओके, so if I was to divide this with dotted lines like this, so it would be something like the following. Okay, so A, B, C, D and E. ये जो E है ये आपकी collecting duct है. Okay, that's the collecting duct. That happens to be the last part of the nephron. A is the Bowman's capsule. यहाँ पे मैंने glomerulus draw नहीं किया हुआ because of course the nephron is with its associated blood vessels. वो हम end पे draw करते हैं. B is the proximal convoluted tubule. C is the loop of Henle. नीचे जाने वाला is descending, ऊपर जाने वाला is ascending. And then D is the distal convoluted tubule. I'm abbreviating it as DCT. And E, of course, as we said, is collecting duct. अगर इसी diagram के ऊपर मैं red color के साथ, बल्कि चले red color नहीं करते, let's do green. So, this ball of capillaries we know is glomerulus. And then this blood vessel that is connecting is the afferent arteriole. और इसका डायमीटर मैंने जानबूझ के लंबा ड्रॉ किया और इससे जो निकल रहा होता है वो जरा थोड़ा it is lesser in diameter, it's efferent arteriole, and this basically helps in generating high hydrostatic pressure. और फिर यहाँ से ये सारी basically blood vessels are sort of all spread out over the structure of the nephron, and then of course they rejoin to form this blood vessel, जिसको हम renal vein कहते हैं. ठीक है जी. So this is a bird's eye view of the structure of the nephron. Now, if I was to draw the nephron as it is in the structure of the kidney, it would look something like the following. थोड़ा सा आपको मैं बड़ा draw कर रहा हूँ. Okay जी, तो ये this is how it would look like. Now, I want you to consider the parts that I have highlighted yellow in my diagram. So the parts that I've highlighted yellow in my diagram, they are number 1, the Bowman's capsule. ठीक है जी. Number 2, the proximal convoluted tubule. And number 3, the distal convoluted tubule. ये तीनों के तीनों parts बच्चों, they happen to be in the cortex section.
Okay, they happen to be in the cortex section. Whereas if I was to highlight this with a different color, let's say pink, ये वाला part और ये वाला part, जितना मैंने pink color से highlight किया है, ये सारा कहाँ पे है जी? ये सारा medulla के अंदर है. So that tells us that the loop of Henle, okay, the loop of Henle and the collecting duct, both of them, they happen to be in the medulla wala part. Okay, so that's basically the distribution of the nephron in the kidney. So now let's go on to the question and see कि वो आपको क्या बता रहा है. अब वो आपसे कह रहा है location बताएं of loop of Henle. So we are supposed to tell the regions where we will find the loop of Henle. So clearly in our diagram उसने medulla वाले portion को C label किया हुआ है. So यहाँ पे हम लिखेंगे C. Location of Bowman capsules, again, please remember, या तो letter एक दफा आ सकता है या more than once भी आ सकता है या not at all भी आ सकता है. जरूरी नहीं है कि आप आंसर में इन सारे लेटर्स को यूज करेंगे. So Bowman's capsule देखें, cortex उसने क्या लेबल किया हुआ है? A लेबल किया हुआ है. So we know that the Bowman's capsule happens to be in A. So there we go. Excuse me. अच्छा जी, और उसके बाद location of glomeruli. ग्लोमेरुलस भी आपको पता है कॉर्टेक्स के रीजन में ही होगा. ठीक है जी, वो भी मैंने आपको ग्रीन कलर से ड्रॉ करके दिखाया था. दिस इज आल्सो ए. कंटेन्स यूरिन एट द फाइनल कंसंट्रेशन. देखें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. किडनी के अंदर ब्लड एंटर हो रहा है एंड द पर्पस, द रीजन व्हाई द ब्लड इज एंटरिंग द किडनी इज बिकॉज द किडनी नीड्स टू फिल्टर ऑल ऑफ द कोट एंड कोट बैड कंटेंट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, ऑल ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट बेसिकली. ठीक है, तो अब आपको पता है कि एज द ब्लड वुड जर्नी थ्रू द नेफ्रॉन, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में चली गई थी, लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, दे आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एंड देन आहिस्ता आहिस्ता द रिमेनिंग फ्लूइड दैट रिमेन्स विद इन द नेफ्रॉन is basically finally going to become urine. So collecting duct के अंदर technically speaking urine finally अपनी concentration में end तक बन जाता है, because collecting duct के अंदर भी of course water काफी ज्यादा reabsorb हो रहा होता है. So it then all of that collects inside this structure that I'm highlighting as, this structure. Yeah, that's the pelvis basically. That's where urine would be collected and then that's how it would be passed down. Okay, so question में हमसे पूछ रहा है contains urine at its final concentration. So urine is ready when it is in a pelvis and then it is poured down into the ureter. So technically speaking, the answer should be both B and D. The answer should be both B and D. Okay, so I really hope it clarifies. Let's move ahead. The volume and water potential of urine. अच्छा जी, थोड़ा सा जरा यहाँ पे let's spend some time. The volume and water potential. Water potential का क्या मतलब होता है? Water potential का मतलब होता है basically the amount of water. Yeah, the amount of water. So अगर for example हम कहते हैं dilute urine है at one end and then there is concentrated urine on the other hand, then how do we understand the water potential? Well, dilute urine का जो water potential है वो ज़्यादा होगा since it's dilute, and concentrated urine का water potential that will be lesser. That will be less. Okay. So coming back to the question, the volume and water potential of the urine produced by the kidney vary according to the water potential of the blood. Okay, great. So this is exactly what we figured out. The volume and so दो चीजें यहाँ पे वो आपको बता रहा है, volume and water potential of urine produced by kidney vary according to the water potential of the blood. Of course, अगर water potential blood में ज़्यादा है, that would lead to more volume of urine. ठीक है जी, that's obviously understood. This is called osmoregulation. So the word osmo is coming from water and regulation, of course, is regulation. Describe the role of aquaporins in osmoregulation. Okay. अब osmoregulation एक general process है, लेकिन specifically he is saying कि आप इनका role describe करें osmoregulation में. So we should be able to go back and figure out where exactly did we talk about aquaporins. Well, aquaporins are basically cells that line collecting duct. Cells
it basically, I'm sorry, they are not cells. They are structures within cells that line collecting duct. And I will quickly go back to the diagram of your textbook. मैंने खोल के रखी हैं पहले से diagrams. It's not this one, it's not this one. अच्छा वो इसी में है ऊपर, ये देखें जी. So यहाँ पे देखें, अगर ऊपर वाली डायग्राम में आपको दिखाऊं तो देखें उन्होंने लेफ्ट और राइट वाली डायग्राम के अंदर लेफ्ट वाली डायग्राम को उन्होंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ऑफ फॉर द कलेक्टिंग डक्ट एंड द राइट डायग्राम इज शोइंग blue highlight of the collecting duct. So the left situation is low ADH, which means ADH ka function is basically to absorb water. It's basically to promote absorption of water through the collecting duct, so that the water can go from the collecting duct back into the blood. Okay, the higher the ADH, the more the water will be reabsorbed. जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने हाई ADH के साथ दिखाया हुआ है कि देखें ज्यादा पानी निकल के जा रहा है from the collecting duct into the respective blood vessels that surround the collecting duct. यहाँ पे उसने आपको दिखाया नहीं हुआ blood vessels. So अगर इसकी हम थोड़ी सी जरा cellular detail पे जाएं, this is basically how they would look like. So this one cell that I'm sort of highlighting is that cell that lines the collecting duct. Okay, so इसमें basically होता क्या है, आप अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें, ADH आता है in the blood and then it combines on these receptors which happen to be on the cell surface membrane of these cells that line the collecting duct. ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला है ना, ये मैं दोबारा बोलता हूँ, इस एक सेंटेंस के अंदर कुछ 3 से 4 मार्किंग पॉइंट्स बनते हैं. Listen to me carefully and then let's sort of deconstruct what my statement is. So the hormone ADH comes from the blood and it attaches on the receptor which is specific for ADH, and the receptor happens to be on the cell surface membrane of the cell that lines the collecting duct. And these receptors, ये किस direction में हैं? They are on the side of the cell surface membrane that is facing the capillary. ठीक है, जो यहाँ पे डायग्राम है आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये वाली साइड भी जो है जिसको मैं डबल लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी भी डायरेक्शन आपको वर्ड्स में आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए. दिस इज द साइड ऑफ द सेल सर्फेस मेम्ब्रेन व्हिच फेसेस द ल्यूमेन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जाके ये एक्वापोरिन्स ने बेसिकली लगना है और उनकी हम अभी बात करते हैं. सो एनी हाउ लेट मी क्विकली रब दिस. ओके, तो आप देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, वो रिसेप्टर पे आके अटैच होते हैं. दैट सॉर्ट ऑफ इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स. ओके, with a specific enzyme that is basically activated, active phosphorylase enzyme. और वो इन वेसिकल्स को, ये जो येलो कलर की वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं इन सेल्स के अंदर, और इन येलो कलर की, ऑफ कोर्स दे आर नॉट येलो इन कलर, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, इनके ऊपर ये वाइट protein channels हैं. We call them as aquapores or aquaporids. Again, they're not white literally in color. I'm just trying to explain. So this enzyme will cause these vesicles which have these aquapores to go and fuse with the side of the cell surface membrane that is facing the lumen of the collecting duct. And once that happens, ये इस cell surface membrane के साथ vesicle क्यों fuse कर जाती है? क्योंकि vesicle भी membrane है phospholipid bilayer, और ये वाली भी membrane है phospholipid bilayer. तो दोनों phospholipid fuse कर जाती हैं because of their fluid nature. Therefore, the aquapores or aquaporins, they are now embedded within the cell surface membrane facing the lumen of the collecting duct, and so the water can basically move through them. पानी जितना भी सेल के अंदर एंटर होता है वो इन स्पेसिफिक channels के through enter होता है. So okay, so that's basically the function of the aquaporins. Now going back to the question, it says describe the role of aquaporins in osmoregulation. So this should basically make it quite easier for us to now answer. So सबसे पहली बात जो हमें पता होना चाहिए कि aquaporins होते क्या हैं. Aquaporins, अच्छा क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करें, पूछ क्या रहा है वो आपसे. डिस्क्रिप्शन, change the color of highlighter. डिस्क्रिप्शन है और 3 मार्क्स हैं. ठीक है, आपने उनका रोल बताना है. मैं चाहता तो मैं पोजीशन भी बता सकता था, मैं ये भी बता सकता था कि वो वेसिकल्स के अंदर होते हैं और जब वो वेसिकल्स फ्यूज करती हैं तब उनके थ्रू पानी गुजरता है, लेकिन वो आपसे जो पूछ रहा है उनका डायरेक्ट रोल पूछ रहा है. सो आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी. ओके, सो aquaporins are
channel proteins. Okay, they are channel proteins. Or channel proteins, aapko pata, they allow hydrophilic molecules to pass through, and water is a classical example. So aquaporins are channel proteins through which water can pass through. Through which water can pass through. ठीक है जी? अच्छा जी. And what do? When more of them, they sort of embed with the phospholipid membrane facing the lumen, they basically increase the perm. So when more of them become part of the cell surface membrane of the collecting duct cell. अच्छा, cell surface membrane का कौन सा वाला part? Facing the lumen. ठीक है जी? When that happens, that increases the permeability. This increases the permeability of water. क्या मतलब permeability increase? भी ज़्यादा पानी अंदर आएगा. I mean, if you look at this diagram, so if there are more of these, the more water will enter. That's और इसको लिखने का दूसरा तरीका ये that increases the permeability. Okay. Yeah. So I mean, more of them. So that's one marking point, and increases the permeability. That's the other marking point. Or channel proteins, 3 marking points. पूरे हो गए, लेकिन मैं encourage करता हूँ हमेशा कि आप एक जितने marks दिए हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की कोशिश करें. So आप बता दें, more ADH would mean more addition of aquaporins to the cell surface membrane. ठीक है जी? So I hope that clarifies. Let's move ahead. C part. Describe the role of the brain in osmoregulation when water potential of the blood increases above the set point. अब देखें, वो osmoregulation के बारे में ही पूछ रहा है. पीछे वो आपसे aquaporins के बारे में पूछ रहा था. That was sort of the last part of the story of the osmoregulation. अब वो बिल्कुल आपको शुरू में लेके जा रहा है कि ब्रेन में जो होता है शुरू में वो बताएं. The role of brain in osmoregulation when water potential of the blood increases above the set point. Okay, so again, let's go back to the diagram of your textbook. This is that diagram. आपको पता है कि brain के अंदर basically there are osmoreceptors in hypothalamus. Osmoreceptors. देखो उसने यहाँ पे osmoreceptor neurons label भी किया हुआ है. वो शुरू हो रहे हैं hypothalamus के अंदर. ठीक है जी? और उनसे होता क्या है? They basically are going to which part of the pituitary? Posterior part. Remember, ADH वाला part has to do with the posterior part of the pituitary gland. It is important कि आप जब भी mention करें pituitary यहाँ पे, तो आप ये posterior वाली चीज जरूर mention करें. Don't mention anterior, that will be incorrect. और वहां पे आप देख रहे हैं कि ADH is being basically it's being released, and then blood, it's basically entering the blood. So उसने आपसे question में पूछा है, describe the role of the brain in osmoregulation when water potential of the blood increases above the set point. क्या मतलब कि पानी बहुत ज्यादा है, the water is already a lot in the blood. ठीक है? So the water is, sorry, describe the role of the brain when water potential increases above the set point. Okay, so if it you know sort of increases above the set point, blood में already ज़्यादा है, तो अब आप खुद सोचें कि the body needs to get rid of a lot of water, which means कि nephron के अंदर वापस reabsorb पानी कम होना चाहिए. भाई ब्लड में पहले ही ज्यादा है, नेफ्रॉन दोबारा से वापस क्यों ढेर सारा पानी रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजेगा? So we need less of the water. So technically speaking, we need less aquaporins. So if we need less aquaporins, that means we need less ADH. So the story should begin something like this. ये जो high, this increase above the set point, increased water potential above the set point is detected by
ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स कहां पे? इन हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे ऑस्मोरिसेप्टर्स का एक अलग मार्किंग पॉइंट है, उसकी लोकेशन कहाँ पे, हाइपोथैलेमस का अलग मार्किंग पॉइंट है। अच्छा, सो आपने अभी डायग्राम में देखा कि वो इंपल्सेस भेज रही हैं व्हिच आर सॉर्ट ऑफ कॉजिंग ADH टू बी रिलीज्ड। वी वांट लेस ADH टू बी रिलीज्ड, देयरफॉर वी वांट लेस इंपल्सेस। ओके, सो ऑस्मोरिसेप्टर्स generate या receive less impulses, so send fewer, receive थोड़ी कर रहे हैं तो आगे भी थोड़ी भेजेंगे, fewer impulses to which part of the pituitary? To the posterior pituitary. Okay, again this is very important. pituitary के spellings जो है ना, वो spellings, कुछ spellings का बड़ा खास ध्यान रखना है आप लोगों ने। posterior pituitary spellings, ठीक है जी, and therefore less ADH released, और फिर बताएं अगर लेस ADH रिलीज होगी of course तो फिर and of course then the remaining is obvious. Okay, so again यहाँ पे posterior pituitary का भी आपको एक मार्क मिलेगा, लेस ADH का भी. So I've written 4 marking points, so that alhamdulillah finishes question 1. मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, लेकिन आप देखें कि हमने 2-3 टॉपिक्स को रिवाइज कर लिए, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, उसकी लोकेशन को, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में सारी जो स्टोरी है, alhamdulillah we've revised all that stuff including the osmoregulation. Now let's move on to question number 2, जो कि I think this is the game changer of this paper. Apparently one of the most difficult questions of this paper, but अगर आप इसको deconstruct करें तो आप यकीन करें ये इजी है. और ये बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ये जीन टेक्नोलॉजी में से टॉपिक होता है, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो इस क्वेश्चन के बारे में, ऑनेस्टली दिस क्वेश्चन शुड बी अ पीस ऑफ केक. सो we're going to go back to the basics for this particular question. Okay, so just bear with me. मैं आपको समझाते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा. I will sort of actually revise a lot of stuff, so just bear with me patiently. और आइडियली स्पीकिंग आपके पास इस वक्त एक प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, और आइडियली तो आपने पहले सॉल्व किया होना चाहिए, बट इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. बिस्मिल्लाह. इट सेज इंटरफेरॉन अल्फा, IFN अल्फा, कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन. रुक जाइए हम देखें पेपर 4 के अंदर बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you read the question once, then you read it twice, then you read it thrice, and then you even read it 4 times, and then even if you read it 5 times, and even if you still don't get it fully, don't worry, read it the 6th time. ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होता. और ये एक्सपेक्टेशन खत्म कर दें कि if you read that you will understand the crux of the question by just reading once. If you think that's the case, then you need to stop your arrogance. Okay, and I'm saying that honestly because एक दफा क्वेश्चन पढ़ के don't suffice with that. Read it again and again, try and deconstruct what the question is saying. Okay, so उसने एक आपको बताया है कि एक प्रोटीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको उसने रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन कहा है. चलें जी, अभी यहाँ पे रुक के आए जरा थोड़ी करते हैं रिविजन. देखें जी, आपको पता है हमारे होते हैं जी क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में देयर आर सेक्शंस व्हिच आर नोन एज जीन्स. Okay, now we know that the genes, they basically are eventually going to produce what are known as proteins. That's the entire story, right? और बीच में of course थोड़े steps हैं. कौन कौन से steps हैं जी? ट्रांसक्रिप्शन होती है, और फिर क्या होती है बच्चों? ट्रांसलेशन होती है. Of course, everything happens in its own respective place, and then eventually we get the protein. ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको पता है RNA polymerase है, और you know all of that story, and some part of the story is very important. Okay, that has to do with these names जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, promoter और operator. यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं. So for example, अगर एक ये जीन का पोर्शन जो है, so if this is the gene that's basically, let's suppose that's the gene, that's one gene जिससे एक प्रोटीन कोई बनना है. अब agar if this gene is there in a person, is it always the case that it will give rise to that protein? The answer is no. Only if this gene is expressed
only then this protein will be made. और एक मैं एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि वो आरएनए पॉलीमरेजेस को आके लग जाएगा. कहाँ पे आके लगेगा? प्रोमोटर रीजन पे लगेगा और फिर वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी. लेकिन आपको पता है कि कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि एक जीन, if this is a gene for example, okay, and let's suppose this is the gene के पीछे usually दो regions होते हैं. So this is the, let's label it here. एक second. So this for example is the promoter region. ठीक है जी. और ये आपका operator region है. OPER से मैं इसको label कर रहा हूं. Of course that's the operator region. So basically what happens is कि there can be two scenarios. Okay, दोनों scenarios में आपको बताता हूं. If the gene is expressed, okay, वो कैसे express होगी? ये हम दोबारा से draw करते हैं. ये एक gene है हमारी जी, that's the gene of interest, that basically has to be expressed. ये operator region है आपका जी, अल्लाह भला करे. और ये आपका है जी promoter region. Okay, so when I say that the gene is expressed, what that means is that this enzyme, which is basically, इस एंजाइम को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसी के अंदर हम इसको लेबल कर लें. So if this is the enzyme, let's suppose that's the RNA polymerase, okay, this will come and this will get attached to the promoter region and transcription will happen. Okay, and the gene will be expressed and therefore we will have the protein. Okay, लेकिन इसके पीछे साइंस ये थी कि there was something that was allowing the RNA polymerase to come and attach to the promoter. वरना कुछ और चीज prevent भी कर सकती है. और वो कब होगी? When it is not expressed. So there can be two scenarios. The second scenario is when there is this gene again, and then there is this operator region, and then there is this promoter region. अब जब जीन ने एक्सप्रेस नहीं होना, now the question is, before I explain this, why will the gene not be expressed? देखें, this is a energy conservation way that the cell has. कि अगर for example एक प्रोटीन, फर्ज करें कोई एंजाइम है, ठीक है जी, हमें पता है एंजाइम प्रोटीन है. एक एंजाइम का सबस्ट्रेट है ही नहीं सेल के पास, तो वो एंजाइम अगर सेल बनाता जाएगा, what's the use of that cell making that enzyme if there is no substrate to digest, to convert that substrate? Basically substrate है नहीं, enzyme बनता जा रहा है. Protein synthesis is an energy consuming process. Okay, so it is one of the ways that the cell has to conserve energy in order to make sure कि अगर एक प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो वो जीन एक्सप्रेस होने की जरूरत नहीं है. And how is the expression of the gene stopped or suppressed? Well, we have special proteins जिनको हम repressor proteins कहते हैं. So there is this concept of these two ideas. There is this idea of a repressor and there is this idea of inducer. Inducer induce करता है, कोई चीज promote करता है, और repressor कोई चीज repress करता है. और genes के context में जो चीज gene expression को stop कर रही है, that is repressor, और जो चीज induce कर रही है, that's an inducer. Okay, so in the second scenario where, so that was the first scenario where the gene was being expressed. In the second scenario where the gene is not being expressed, वहां पे होता क्या है कि एक भाईजान जिनको हम कहते हैं रिप्रेसर भाईजान, वो आके अटैच हो जाते हैं ऑपरेटर रीजन के साथ, रिप्रेसर. और अब मसला ये है कि उस रिप्रेसर ने, it has covered part of the promoter region also, therefore making it impossible for the RNA polymerase to come and get attached to the promoter region. Attachment not possible and therefore transcription not possible. And if transcription नहीं हो रही, attachment नहीं हो रही, तो transcription भी नहीं हो रही, इसलिए ये gene not expressed. And if it is not expressed, then guess what? No protein is being made. So this is basically the scenario. वहां पे ऊपर जहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, वहां पे भी रिप्रेसर भाईजान शायद थे, लेकिन रिप्रेसर की जो शेप है वो थोड़ी सी हो गई चेंज. वो किसने चेंज की?
you need to understand this part of the story. वो basically एक मॉलिक्यूल ने चेंज की जिसको हम कहते हैं इंड्यूसर, और लैक ओपरॉन में वो इंड्यूसर लैक्टोज था बेसिकली. सो इंड्यूसर बेसिकली इंड्यूसर चेंजेस शेप ऑफ रिप्रेसर को मैंने लेबल नहीं किया, लेबल कर देते हैं. रिप्रेसर, so stopping it from, so preventing it from attaching to the, the operator, the operator, and therefore transcription हो जाती है. ये स्टोरी है बेसिकली, और ये लैक ओपरॉन में बेसिकली यही कुछ होता है. मैंने लैक ओपरॉन की एग्जांपल नहीं यूज की, जनरलिटी में टर्म्स यूज की हैं. वहां पे भी यही होता है सारा कुछ कि अगर लैक्टोज बेसिकली होगा तो वो लैक्टोज एक्ट्स एज एन इंड्यूसर और रिप्रेसिबल एंजाइम को अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिप्रेसिबल एंजाइम इज अनएबल टू अटैच एंड देयरफॉर द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड लैक्टोस्पर्मियाज आर मेड, जो कि लैक्टोज को फिर डाइजेस्ट कर देती है. ठीक है, सो ये कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता हो ना तो दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली इज अ पीस ऑफ केक. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. Again, interferon alpha can be produced as a recombinant human protein. अच्छा जी, नॉर्मली अगर कोई जीन है उससे एक नॉर्मल प्रोटीन बन रही है, बहुत अच्छी बात है. ये रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन किस खेत की मूली है? वेल, ये उस खेत की मूली है जब आप अपनी जीन के अंदर, सो दिस इज द नॉर्मल जीन, और इसके साथ आपने बाहर से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कोई फनकारी मार दी है, एंड दिस इज अ फॉरेन जीन or that you have inserted because of any reason. So as a result, this entire thing is now known as a recombinant DNA. ठीक है जी, और ये recombinant DNA जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी बच्चों, उसको भी हम क्या कहेंगे? recombinant protein. Okay, so now the first sentence is making full sense that IFNA alpha can be produced as a recombinant human protein, which is telling us कि ये चीज जो है ये प्रोड्यूस हो रही है because of a foreign gene that has been inserted to treat some types of cancer. Okay, fair enough. Let's move forward. The gene IFNA-A2 codes for, अच्छा जी, ये है जी वो foreign gene basically जो कि इंसर्ट होनी है, जिसकी वजह से ये IFNA अल्फा रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस होना, जो कि कैंसर को प्रिवेंट करता है. वो कैसे करता है वो बात की बात है, बट दैट्स द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन. ओके, one method of producing recombinant IFNA alpha uses genetic engineering. E. coli, आपको पता है बैक्टीरिया बेचारों की शामत आती है, और क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं that contain recombinant plasmids. Again, what is a recombinant plasmid? A recombinant plasmid is a plasmid that will contain basically foreign genes. Okay, अब वो खुद बता रहा है कि each recombinant plasmid contains the following. Number one, the gene IFNA2. That's a foreign gene. ये हमें कैसे पता लग गया foreign gene है? क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाला जो प्रोटीन है उसको क्वेश्चन खुद recombinant कह रहा है. So therefore, if anything is being produced, any protein being produced is being called as recombinant, it means it is as a result of a foreign gene. Number two, 3 regulatory sequences of the lac operon. जी, लैक ओपरॉन से आपको कुछ याद आना चाहिए. बच्चों को मैंने वो नेमेनिक बताया था, आईपोजी वाला. या सो ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं. वाई वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, आई एम सॉरी. सेटिंग्स क्यों खुल गई हैं, इसको बंद करते हैं. या सो ONZ and then we have the promoter region and the inducer region. Of course, जो आपका लैक ओपरॉन का पोर्शन है उसमें इंड्यूसर ऑफ कोर्स इज नॉट इंक्लूडेड, बट एनी हाउ उसने आपको ये 3 चीजें बताई हैं. कौन कौन सी? प्रोमोटर, ऑपरेटर और लैक आई. ओके, सो ये कहाँ पे हैं? प्रोमोटर, ऑपरेटर और लैक आई. वो कह रहा है ये 3 रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं. ओके, दैट रेगुलेट. सो व्हाई आर वी कॉलिंग देम एज रेगुलेटरी सीक्वेंसेस? देखें यहाँ पे once again we need to go back
और जीन्स जो हैं वो दो किस्म की होती हैं बच्चों। जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, ये वाली जीन की, जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ येलो कलर से, ये वाली जो जीन है, सॉरी माय बैड, दिस जीन happens to be a functional gene, okay, while ये जो पीछे मैंने प्रोमोटर ड्रॉ किया, ऑपरेटर ड्रॉ किया, ये भी जीन्स ही हैं, डीएनए ही है, न्यूक्लियोटाइड्स है, बट दे आर नॉट कोडिंग for a protein, but they are regulating the expression of these functional genes. तो जो genes regulate करती हैं expression को, उनको हम regulatory sequences कह देते हैं, as simple as that. Okay, so basically we can divide genes into either functional genes या structural genes कह लें, यानी कि basically functional ना कहें, आपका syllabus structural कहता है. Okay, so let's stick to your syllabus. Structural genes which basically are coding for proteins, और दूसरी regulatory genes हैं जो कि इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं. ठीक है जी. सो बहरहाल हम वापस आते हैं, पॉइंट 2 की बात कर रहे थे कि प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या है. सबसे नंबर 1 इज दैट फॉरेन जीन, दैट्स द जीन फॉर IFNAA2 which will code for this alpha protein. Number 2, 3 regulatory sequences of lac operon, promoter, operator, and lac-I. And number 3, gene for antibiotic resistance. Okay, great. AMPR, ये जी antibiotic resistance. और ये IFNA2. तो हमें अब पता लग गया कि जी ये है जी प्लाज्मिड के अंदर. और the reason maybe why we're calling it as a recombinant plasmid is because इसमें foreign genes हैं. चलें जी आगे चलते हैं. Each of the sequences for lac-I gene and AMPR gene contains its own promoter. Oh, now we know what is a promoter. ऊपर हमने रिवीजन कर ली है. Promoter बच्चों वो रीजन है जहां पे आके RNA polymerase ने अटैच होना है और ट्रांसक्रिप्शन होनी है, and therefore the gene will be expressed. Okay, so कह रहा है कि lac-I के पास excuse me, lac-I के पास अपना प्रोमोटर है. ठीक है जी, प्रोमोटर, और AMPR contain its own promoter. चलिए यहाँ पर प्रोमोटर ड्रॉ कर देते हैं. प्रोमोटर उन्होंने दिखाया नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर दिया. इसको हम जरा कलर भी कर देते हैं, जस्ट इन केस इफ यू आर मिसिंग कलरिंग. जब आप छोटे थे लाइफ वाज सो इजी. हाँ, well trust me, life is still easy in A levels. खैर, anyhow, let's not go into this philosophical debate. ठीक है जी, तो दोनों के प्रोमोटर हमने ड्रॉ कर दिए. As a result, these genes are always expressed. Oh yes, we understand why they're always expressed, because promoter होगा तो यहाँ पे आके RNA polymerase attach होगा, ये transcribe होंगी, translate होंगी और protein बनेगा. We agree with this part of the statement. In E. coli bacteria that contain this recombinant plasmid. Agreed, 100%. तो ये अगर AMPR transcribe होगी तो इससे क्या फायदा होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि इस बैक्टीरिया को जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स दे दें, ये इट विल सर्वाइव. एंड देन lac-I. Okay, so let's see what the question has to say for us. Figure 2.1 is a diagram of a recombinant plasmid. We figured that already because हमने देख लिया इसमें IFNAA2 है जीन जो कि एक recombinant जिसकी वजह से ये plasmid recombinant बना है. The promoter region of lac-I gene and AMPR gene are not shown. ठीक है जी, हमने ड्रॉ कर ली, आपने नहीं शो किए तो हम क्या करें? We are good students and we want to draw everything that we deem appropriate. चलिए जी आगे चलते हैं. The start of transcription of gene IFNA2. ठीक है जी, ये वो फॉरेन जीन है, ये ट्रांसक्राइब होगी by E. coli with recombinant plasmid shown in figure 2.1 needs to be controlled to obtain an optimum yield of IFNA alpha. क्या मतलब? वो कह रहा है कि ये जो जीन है ये ट्रांसक्राइब तो हो जाएगी, लेकिन इसकी ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करना है. लेट्स गो बैक टू आवर रिवीजन. वेल, यहां पे भी आप देखें ऑपरेटर, सॉरी, जो प्रोमोटर जीन है, जो प्रोमोटर सीक्वेंस है, उसकी भी, यानी कि ऐसे तो नहीं है कि बस प्रोमोटर है और फिर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, नहीं. इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समथिंग एंड दैट समथिंग इज द इंड्यूसर. ओके, बिकॉज इंडक्शन हो इंड्यूस करेगा कोई चीज तो फिर वो रिप्रेसर को स्टॉप करेगा ना बाइंड करने से, एंड देयरफॉर द जीन विल बी एक्सप्रेस्ड. ऑलराइट, सो once again
I'm reading a part again. Listen to it very carefully. The start of the transcription of gene, ये वाली IFNA2 by E. coli with recombinant plasmid shown in figure 2.1 needs to be controlled to obtain an optimum yield. यानी कि बहुत ज्यादा भी ये प्रोटीन नहीं हम चाह रहे, बहुत कम भी नहीं चाह रहे, इसको कंट्रोल करना है, इस एक्सप्रेशन को किसी तरह. Scientists investigated the effect of two inducers. Okay, we have already discussed what are inducers. ठीक है जी, of transcription on the production of IFNA. अब वो two inducers खुद बता रहा है कौन कौन से. Number 1, lactose. Okay, ठीक है जी. लैक्टोज इंड्यूसर करता क्या है, वो रिप्रेसिबल प्रोटीन के साथ. हमारी एग्जांपल में उसने लैक्टोज को कहा इंड्यूसर है. तो लैक्टोज जब रिप्रेसिबल एंजाइम को बाइंड करेगा तो वो इट विल प्रिवेंट द रिप्रेसर फ्रॉम combining to the operator region and therefore transcription will happen. Okay, great. So पहला इंड्यूसर है जी लैक्टोज which is converted into allolactose. ठीक है जी, लैक्टोज एक इंड्यूसर है और उसने हमें ये भी बता दिया कि वो कन्वर्ट हो जाता है in E. coli into allolactose. तो इसका मतलब है कि जब वो कन्वर्ट हो जाता होगा तो वो अपना इंड्यूसर वाला फंक्शन खत्म कर देता होगा, बिकॉज लैक्टोज इज द इंड्यूसर, राइट. और अगर वो अपना लैक्टोज अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ये इंड्यूसर खत्म हो जाता होगा E. coli से. और जब इंड्यूसर खत्म हो जाएगा तो इट विल स्टॉप बाइंडिंग टू द रिप्रेसिबल प्रोटीन एंड रिप्रेसिबल प्रोटीन विल देन बाइंड एंड देन मे बी दिस जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड. सो देयरफॉर लैक्टोज अगर इंड्यूसर है तो हम ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक्सप्रेशन विल फिनिश. ओके, व्हिच मींस कि ये जो प्रोटीन है अल्फा प्रोटीन IFN अल्फा, ये थोड़ा कम होगा किसमें, when the lactose is inducer. मेरी बात को समझने की कोशिश करें, दिस इज वेरी इजी. उसने कहा ये लैक्टोज इंड्यूसर है, हमने बात मान ली. अगर इंड्यूसर होगा तो क्या होगा, इट विल बाइंड टू द रिप्रेसिव प्रोटीन हियर एंड दैट विल स्टॉप the repressive protein from binding to the operator and therefore the RNA polymerase will continue with the transcription. वो बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी और therefore ये वाली प्रोटीन बन जाएगी. लेकिन वो खुद आपको इसमें बता रहा है कि ये जो लैक्टोज है ये कन्वर्ट भी हो जाता है एलोलैक्टोज में. तो एलोलैक्टोज तो इंड्यूसर नहीं है. Okay, so when the inducer finishes, of course the protein that is being made will be finished because suppression कम हो रही है ना, तो कम बनेगा लैक्टोज के केस में ये जो recombinant प्रोटीन है. Number 2, IPTG, which is a synthetic molecule with very similar structure to allolactose. IPTG cannot be broken down by E. coli. Okay, यानी कि अच्छा उसने हमें सेकंड पार्ट में बता दिया कि एलोलैक्टोज के साथ वो सिमिलर है और इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. सो ओके, सो इसका मतलब है कि इस केस में फिर एक्सप्रेशन होती रहेगी. सो इस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि IF इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी सेकंड केस में. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. द साइंटिस्ट grew 3 cultures of E. coli containing recombinant plasmid in the same growth medium. अच्छा जी, ग्रोथ मीडियम के अंदर क्या था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एसेंशियल विटामिन्स. ठीक है जी, बैक्टीरिया शैक्टीरिया ग्रो कर जाएं. द ग्रोथ मीडियम डिड नॉट कंटेन लैक्टोज. ठीक है, क्योंकि हमने 3 कल्चर्स उसने ग्रो किए हैं. कौन कौन से वो आगे हम देख लेते हैं, लेकिन ग्रोथ मीडियम के अंदर लैक्टोज नहीं था क्योंकि इंड्यूसर एक ऑलरेडी लैक्टोज है. ठीक है जी. After 4 hours, either lactose or IPTG at the same concentration was added to the 2 of the cultures of E. coli as a control. उसने 3 की बात की है, ऊपर यहाँ पे 2 की क्यों बात कर रहा है? As a control, a third E. coli was grown without adding lactose or IPTG. अच्छा, ठीक है. अच्छा, उसने तो बेसिकली उसने क्या किया, नंबर 1 लैक्टोज इंड्यूसर के साथ, इंड्यूसर लैक्टोज है, बाकी सारी इसमें कंडीशंस वही हैं. बाकी सारी कंडीशंस जो सेम है. कौन कौन सी, ये आपकी अल्लाह भला करे, ग्लूकोस, अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल विटामिन्स, ग्लूकोस, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, ये सेम है. नंबर 2 में जो इंड्यूसर है वो IPTG है, इसमें भी कंडीशंस सेम है. ग्लूकोस है, अमाइनो एसिड्स हैं, इसी तरह विटामिन्स हैं. और नंबर 3 ये कंट्रोल है, इसके अंदर लैक्टोज नहीं है.
just as a control. Okay, and we understand in scientific investigations, control have a very important function. Okay, so as a control, the third culture of E. coli was grown without adding lactose. ठीक है जी, अब जरा ग्राफ को स्टडी करना है मैंने और आपने अच्छे तरीके से। अब आप देखिए, अब असल में क्वेश्चन आ रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर इस तरह का क्वेश्चन हो और इनिशियली आप बहुत ज्यादा आपको लग रहा है ये टाइम ले रहा है और आपको फौरन समझ नहीं आ रहा, तो इट इज रिकमेंडेड यू लीव दिस एंड यू फिनिश द रेस्ट ऑफ द पेपर एंड यू कम बैक टू दिस. ओके, एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन पेपर 4 जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. आइडियली तो आप साथ साथ कर ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप बाकी सारे मार्क्स को गैदर कर लें बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पेपर अपेरेंटली इज वेरी इजी. It was only this part of the paper that sort of posed a challenge. So I mean that's perfectly fine. The concentration of recombinant IFNA in the cultures was measured at different times over a period of 28 hours. कुछ हमने भी अपनी इन्फरेंस की थी, यहाँ पे अब ग्राफ से देखते हैं. कंट्रोल वाले को देखें, वो तो बेचारा बिल्कुल ही उसमें ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो बेयर मिनिमम है. क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल है, उसमें कोई लैक्टोज शैक्टोज इंड्यूसर वगैरह है ही नहीं, तो समझ में आती है. ठीक है जी, सो लेट मी हाईलाइट दैट विद येलो. उप्स, ये तो हाईलाइट हुआ ही नहीं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, अल्लाह आपका भला करे, येलो कलर से. ठीक है जी, कंट्रोल कल्चर समझ में आ गई जी, फेयर इनफ. ओके, नाउ द कल्चर विद आईपीटीजी, ये वाली लाइन, ये देखें, ये वाली, इसको डिफरेंट कलर से करना, सॉरी, करते हैं जी ग्रीन कलर से. चलें, ये देखें जी, अल्लाह आपका भला करे, ये बेहतरीन किस्म की ग्रीन लाइन है. नहीं सॉरी, दिस इज दिस वन. इसमें आप देखें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो रही है. दिस इज व्हाट वी कंक्लूडेड एक्चुअली, कि इसमें आईएफ की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें इंड्यूसर है और वो ब्रेक डाउन नहीं होगा. ओके, एंड देन वी हैव कल्चर टू विच लैक्टोज वाज एडेड. उसमें कॉन्सेंट्रेशन जा रही है ऊपर, लेकिन वो फिर थोड़ी देर के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाती है. Okay, and this is exactly what we concluded. Now let's look at the question. The regulatory sequences of lac-operon contained in the recombinant plasmid are involved in the control of transcription of IFNA2. ये जनरली हमें पता है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, और इस केस में वो इस रिकॉम्बिनेंट जीन को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, जो लैक-ओपेरॉन के रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, व्हिच इज बेसिकली टेलिंग अस कि असल में प्रिंसिपल यहाँ पे लैक-ओपेरॉन का ही है. बस उसने वो वाली स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि लैक-ओपेरॉन के लिए कोड करती हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोपर्मीज, उसके बजाय उसने IFNA2 डाल दिया. So it's a new situation with the same principal concept that you've studied already. Explain the role of gene LAC-I in the control of transcription of IFNA gene between 0 to 4 hours. 0 to 4 hours में क्या हो रहा है? 0 से लेके 4 hours तक. ओ, ये IFNA अल्फा एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा, या बहुत कम है, बेयर मिनिमम. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ IFNA जीन एंड देयरफॉर नो, या बेयर मिनिमम, या नो, या लीस्ट एक्सप्रेशन. तो अगर बच्चों ऊपर आते हैं वापस अपने नोट्स पे, अगर एक्सप्रेशन नहीं हो रही तो ये वाला सारा सेकंड सिनेरियो हो रहा होता है, which means the repressor is bound to the operator and therefore the RNA polymerase cannot bind and therefore the gene cannot be expressed. So how do we put it in words? Well, this is how we put it in words. अच्छा जी, सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि this is A1, right? Yeah. So हम लिखेंगे कि ये LAC-I जो है, जीन LAC-I codes for repressor protein. That binds, कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर रीजन पे. ठीक है जी. This prevents transcription of IFNA2
एंड बेसिकली जिसका मतलब क्या है कि वो अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. मैंने टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट लिख दिया कि वो प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस. ओके, so therefore low और नो तो नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ में आपको थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन दिखा रहा है. सो लो एक्सप्रेशन, वेरी लो कर देते हैं, expression of IFNA2, and so low IFN alpha recombinant protein production. Recombinant protein production. ठीक है जी, 2 marks हैं. I've written more than 2 required marking points, so I really hope that makes sense. चलें जी, फिगर with reference to figure 2.2, ये हलवा क्वेश्चन है. ग्राफ को डिस्क्राइब करना हो बच्चों तो 2 बातें याद रखें, लेकिन उसने कहा है कि जी पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. With reference to figure 2.2, describe the changes in the concentration of recombinant IFNA alpha in the culture containing IPTG. And IPTG, अच्छा वो IPTG की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, सबकी नहीं पूछ रहा. और कौन से आवर से लेके 4 से लेके अल्लाह आपका भला करे कहां तक, 28 आवर्स तक, यहां तक आईपीटीजी. सो आईपीटीजी वाला कौन सा है, ये वाला है. सो बेसिकली यहां से लेके यहां तक, बेसिकली पूरी तकरीबन पूरी लाइन जहां से एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. वो आपसे कह रहा है विद रेफरेंस टू फिगर 2.2, describe the changes in concentration of recombinant IFN alpha in the culture containing IPTG when IPTG was added, blah blah blah. Okay, ग्राफ की डिस्क्रिप्शन में बच्चों 2 बात याद रखें. ट्रेंड को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है और साथ आप जो है वैल्यूज को कोड कर दिया करें. ठीक है जी, कि किस, और ट्रेंड को कोड करने का एक और आसान तरीका ये है कि इनिशियल बता दें ग्राफ का, और फिर बीच में अगर मिडिल में कोई चीज है, कोई बहुत ज्यादा ग्रेडियंट कर्व हो रहा है या ज्यादा स्टीप हो रहा है, और फिर लास्ट वाला पोर्शन बता दें. सो आई मीन जब मैं बच्चों को कहता हूँ ना ग्राफ का ट्रेंड डिस्क्राइब करें, तो वो कहते हैं क्या मतलब ट्रेंड. सो यू टेक द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ, उसको डिस्क्राइब करें वैल्यू के साथ, फिर मिडिल में अगर कोई चीज है तो उसको डिस्क्राइब कर दें, लास्ट में है तो उसको डिस्क्राइब कर दें. ठीक है जी. सो अगर हम देखें ग्राफ को, सो शुरू में 4 आवर्स में आप देखें कॉन्सेंट्रेशन कहां से लेके कहां तक पीक पे जा रही है, किस टाइम तक जा रही है, इस टाइम तक जा रही है. सो हम लिख देते हैं 4 to 8 आवर्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, विच इज बेसिकली 290, नहीं 285. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी राइट द फर्स्ट थिंग. सो हम लिख देते हैं कि फ्रॉम 4 to 8 आवर्स, फ्रॉम 4 to 8 hours, concentration of IFN alpha increases up to कितना जी हमने किया था, 285 यूनिट्स. क्या है 285 माइक्रोग्राम पर डीएम क्यूब. ठीक है जी. अच्छा जी, फिर उसके बाद आप देखें कि 8 आवर्स से यहां तक बड़ा ड्रास्टिक डिक्रीज आता है. दिस इज आई थिंक 16. सो 8 to 16, असल में 8 to 28 है ही डिक्रीज, लेकिन 8 to 16 is the sharpest decline. From 8 to 16 hours, decline in concentration is sharpest or steepest. ठीक है जी. टिल विच कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे भी वैल्यू कोड कर दें. कहाँ तक आया है जी, यहाँ पे अल्लाह भला करे यहाँ तक आया, which is if I'm not mistaken 140 microgram per dm cube. 140 microgram per dm cube. ठीक है जी. और फिर एंड पे उसको बता दें कि आप कहाँ पे जो है ना वो जो है वो आई मीन सो दिस बेसिकली डू. देखिए मैंने ट्रेंड भी बता दिया है, और मैंने सो 1 मार्किंग पॉइंट, 2 मार्किंग पॉइंट, 3 मार्किंग पॉइंट, 4 मार्किंग पॉइंट. सो आई मीन अगेन ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन फ्री मार्क्स होते हैं. आगे चले जी. थर्ड पार्ट, सजेस्ट वन रीजन. अच्छा एक बात याद रख लें, सजेस्ट जब भी आता है ना तो आपने जूम आउट करना है,
literal zoom out नहीं, you have to zoom out in thinking and look at the big context of the question. याद करें question शुरू कैसे हुआ था, तो suggestion के questions answer करना easy हो जाते हैं. Suggest one reason for the difference between concentration of IFNA alpha in the culture at 8 hours in the presence of lactose and the concentration of recombinant IFNA in the culture at 8 hours, वही time, in the presence of IPTG. ठीक है जी. ग्राफ देखें, वो कह रहा है कि 8 hours में, मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर ले आता हूं ताकि हम जरा, सो 8 hours में वो कह रहा है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में जरा डिफरेंस को जस्टिफाई तो करें. ये 285 दिखा रहा है, ये 100 दिखा रहा है. नहीं 100 नहीं दिखा रहा, हाँ 100 ही दिखा रहा है. सॉरी, नॉट 100, दिस इज 8 hours पे ये लाइन आ रही है यहाँ पे, विच इज ऑलमोस्ट 75. तो वो आपसे कह रहा है सजेस्ट करें वन रीजन फॉर दिस डिफरेंस. ओके, हमने ऊपर बेसिकली क्वेश्चन को समझते हुए इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है. सो दिस डिफरेंस यानी कि लैक्टोज के केस में कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों है, बिकॉज हमने पहले सजेस्ट कर दिया था कि लैक्टोज ऑल्दो lactose is a repressor, but it gets converted into allolactose. वापस जाते हैं जरा ऊपर रिवीजन पे, देखें ये जो मैंने डायग्राम आपको शुरू में ड्रॉ करके दिखाई थी कि लैक्टोज इंड्यूसर था, लेकिन अगर वो खत्म हो रहा है तो फिर रिप्रेसर, it is not anymore binding to the repressor. So therefore the repressor will be able to go and bind to the operator, and therefore the gene will not be expressed, or therefore the protein की concentration is lesser. So हम यहाँ पे उसको ये कहते हैं कि although lactose is a repressor, but it gets converted to allolactose, therefore less of it binds to repressor. ठीक है जी. So less of it binds to the repressor. Yep. और on the contrary, of course हमने other side of the coin explain कर दिया है. While 8 hours पे IPTG की concentration, वैसे तो you know it's the reverse argument, आप दोनों दे सकते हैं. अगर मैं इसका opposite लिख देता तो भी ठीक होता कि IPTG is not broken down. ठीक है, therefore it continues to bind with the repressor, and therefore transcription होती रहती है, and therefore more protein is made. लेकिन हमने the other side of the argument लिख दिया, so I mean that is perfectly fine. So let me reread and complete my statement. Although lactose is a repressor, but it gets converted into allolactose, so therefore less of it binds to the receptor, and so एक second. Although lactose is a repressor, but it gets converted into allolactose, therefore, yeah, not enough to bind to all receptors. ठीक है, that's fine, that's fine. असल में मैं रिवर्स साइड ऑफ द आर्गुमेंट नहीं लिख रहा, आप कोई भी एक लिख लें. आई थिंक मार्किंग स्कीम में उसने सारे दिए हैं, लेकिन ये 1 मार्क का है और उसने मार्किंग स्कीम में कहा था एनी वन फ्रॉम. सो यू कैन राइट द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट आल्सो, व्हिच मी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया. चलें जी, फोर्थ पार्ट. Suggest one reason for the change in the concentration of recombinant IF and alpha in the culture containing IPTG from 12 to 16. 12 to 16, ये है जी 12, अल्लाह आपको भला करे, ये वाला और ये वाला 16, ये वाला. इसमें डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये वो आपसे पूछ रहा है. इसका वन रीजन बताएं. वेल, सजेशन का क्वेश्चन है. ओके, सो आई मीन हम कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट कि क्या वजह है कि यू नो दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ डिक्रीजिंग. वेल, इसमें हम काफी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं. मसलन हम कह सकते हैं कि जी कॉन्सेंट्रेशन इस प्रोटीन की कम हो रही है कल्चर कंटेनिंग IPTG. ऑल्दो IPTG जो है वो it is causing the expression,
लेकिन ये प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हो रही है? Well, we can say that maybe the protein with time, the protein may break down because of a possible instability, because of possibly being unstable. ठीक है? Again, आप कुछ भी suggest कर सकते हैं, लेकिन ये है कि this is basically what we can suggest. या फिर हम ये भी suggest कर सकते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो somehow they're decreasing in number. बैक्टीरिया डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लाज्मिड भी डिक्रीज होगा. So I mean, this is acceptable. B part. The gene AMPR is a plasmid. In the plasmid shown in figure 2.1 codes for protein that provides resistance to antibiotic ampicillin. Suggest how AMP. अच्छा ठीक है, ये वो आपको याद होगा क्वेश्चन के शुरू में उसने बताया था, ये वो जीन है जो कि प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. अब वो कह रहा है कि सजेस्ट करें कि ये जीन, how this gene allows genetically engineered E. coli containing recombinant plasmid to be identified. वेल जाहिर बात है कि जिनमें ये जीन होगी उनको एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करेगी. दैट्स वेरी सिंपल. एंटीबायोटिक will not affect these bacteria containing these plasmids, so only they will grow. The others will of course not grow. बाकी antibiotics से kill हो जाएंगे, but only they will survive. Okay, the last part. Bacteria can evolve antibiotic resistance through the natural processes. Outline how bacteria can evolve to become resistant to antibiotics. अच्छा, ये एक बड़ा general सा question है. Okay, how can they become resistant to antibiotics? और अगर हम ऊपर जाएं क्वेश्चन पे, कैन वी गेट सम सॉर्ट ऑफ हिंट? ओके, चलिए जी. सो आउटलाइन वो कह रहा है, आउटलाइन और 5 मार्क्स हैं, तो आपने जनरली स्पीकिंग बताना है कि कैसे जो है ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स. ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस इज बेसिकली, दिस प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है जी. और आपको पता है कि ये इनिशिएट होती है विद रैंडम म्यूटेशन. Random mutation, which basically will cause these bacteria to become resistant. और of course इसको आपको थोड़ा सा explain करना पड़ेगा कि bacteria with these genes, random mutation की वजह से कुछ genes हैं which are making them antibiotic resistant. Okay, so bacteria with these genes, they code for antibiotic resistance. ठीक है जी. And then of course how ये antibiotic resistance उन्हीं बैक्टीरिया में रहेगी तो फिर evolve नहीं होंगे. It has to be passed on. So when bacteria reproduce, और of course उनके reproduction का पूरा process है, हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है conjugation का, they pass on these genes. Okay, and therefore of course they become resistant. और अगर आप इसको देखें, and of course in this case antibiotic can act as selection pressure. और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप याद करें कि नेचुरल सिलेक्शन में देयर वर 3 टाइप्स. एक थी डायरेक्शनल सिलेक्शन थी. डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या थी कि एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पे सिलेक्शन प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एन एंटीबायोटिक. सो इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ सिलेक्शन वी कैन कॉल दिस एज डायरेक्शनल सिलेक्शन.